Okay, today we are going to start a new topic of economics. The name of the chapter is Poverty as a Challenge. We all know that, bacha. There is a survey done by Indian authority, and on it has declared that every fourth person is poor in India. Bacha. If overall we'll see it, we can find fourth person in India is poor. It is declared by the survey book. In India, right now, different type of challenges faced due to lack of some facilities. Bachcha. If we will discuss about that, the first thing is that availability of food, the basic thing. We all know that. Lack of education, second one. And third one, we can say food and shelter. If we will not get better facility upon health, education, food and shelter, we'll suffer. If we'll not going to getting good health, we'll suffer different type of diseases, and we cannot say that we are being our country is investing different sector to prepare a good resource like health, education, and food and shelter. You all know that, bacha, in present time our state government has implemented a policy named is Abu Awas Yojana. Did you all hear that about that? According to them, the state government providing shelter to each and every categories of peoples, Babu. Those who have lack of pakka houses, Babu. It means in present time we are living in 21st century and the world are moving towards space. We all know that we all heard the name Tesla. He is imagining about that, bacha, the person Elon Musk. It seems he is imagining it that after some years he is imagining it the people will settle a small village at moon. Babu. दुनिया आज इतनी आगे चली गई है कि एलन मस्क इमेजिन कर रहा है कि दुनिया अब कहां पे होगी बच्चा, चांद में, है ना. एंड टिल नाउ we are suffering from different till now India is suffering from different type of lackness, which are like in health sector. Presently we can see a data by an Indian ministry, which are, and they provided the data that Indian peoples getting food from PDS is approximate 80 crore, bacha, है ना. The survey has done it, and the ministry announced it. 80 crore persons are getting benefited through PDS, bacha. We can imagine about that, bacha. What are the standard of us? What are the living standard of us? And why we are suffering from it? So today the topic poverty as a challenge, we'll discuss some points. That's why India is behind to provide all facilities to each and every categories peoples, and what are the ways that we can fight amongst these. So let us discuss.
approximate 270 million. It means 27 crore people in India live in poverty. It is the data of 11 and 12, 2011 and 12. Okay. Yes, sir. If we will discuss about that, bacha, now the present time we are at 2024, 25 data will release at February. If we will discuss poverty, what is poverty and what is the real meaning of poverty in context of India, bacha? Poverty means hunger and lack of shelter. अगर हम इसको फुल्ली डिवाइड करें तो इन रेस्पेक्ट ऑफ इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया बच्चा, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें बच्चा, तो आज अमेरिका और इंडिया का थोड़ी सी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कह सकते हैं बच्चा, वी कैन से इट बच्चा, इन अमेरिकन या अमेरिका में वो व्यक्ति हु इज नॉट अफोर्ड टू बाय ए कार, ही इज कॉल्ड पुअर. एक व्यक्ति अमेरिका में जो कार खरीदने में सक्षम नहीं है वो व्यक्ति गरीब कहलाता है. इन इंडिया वी ऑल नो दैट बच्चा, ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू टेक 2 टाइम मील बच्चा, ही इज कॉल्ड पुअर. एक पर्सन वह व्यक्ति जो 2 जून का भोजन, 2 टाइम का फूड प्रोवाइड करा नहीं पा रहा बच्चा, उसे हम गरीब कहते हैं. द कंपेरिजन बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया in respect of poverty, we can say that parents are not able to send their children to school बच्चा. ये भी पॉवर्टी का एक सेकेंड हम कह सकते हैं बच्चा, कि आज भी पेरेंट्स एबल नहीं है अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में. बट गवर्नमेंट हैज डिफरेंट पॉलिसीज टू अट्रैक्ट students towards schools. We all know that बच्चा, right to education, right to education के तहत सरकार बच्चों को शिक्षा 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चों को एसेंशियल एजुकेशन देने की बात करती है ना बच्चा. Now sick people cannot afford treatment, lack of clean drinking water and sanitation facilities. If we will discuss about it बच्चा, so some of the sections, the people belonging from bachcha, they are not able to afford the prices of medicine, they are not able to afford the transportation cost to visit a doctor at once बच्चा. बहुत सारी ऐसी जगह आज भी है बच्चा इंडिया में जहां पे लोग सक्षम नहीं हो पाते, एबल नहीं हो पाते हैं कि सारी हेल्थ फैसिलिटी अपनी प्रोवाइड करा पाए. वो ये भी सक्षम नहीं हो पाते हैं कि वो मेडिसिन बाय कर सके, नहीं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करके वो वहां हॉस्पिटल जा सके. आइदर सरकार बच्चा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सरकार क्या कर रही है बच्चा, आपको एम्बुलेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, फिर भी हम उसकी सेवा नहीं ले पाते हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चा, है ना, सूचना के अभाव में. ठीक है मुन्ना. तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट. हमारे सोशल साइंटिस्ट के नजर में पॉवर्टी क्या है, विल डिस्कस अबाउट दैट बच्चा. तो पॉवर्टी इंडिकेटर्स, सम ऑफ द इंडिकेटर्स थ्रू दैट वी कैन फाइंड इट इज कॉल्ड पॉवर्टी. कुछ इंडिकेटर हैं, इसके सूचक हैं, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट बच्चा, कि पॉवर्टी क्या है ना. तो वी कैन फाइंड इट थ्रू इलिटरेसी लेवल. अशिक्षा का स्तर क्या है, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, sanitation, social exclusion and vulnerability. These are the some indicators through that we can find the means of poverty. अगर अशिक्षा का स्तर है, अगर हमें साफ पानी अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं पीने के लिए, रहते हैं लाइक बोकारो, lot of hospitals are available at there, but some of the people, they are belonging from such type of sections, they are not able to
take these facilities through the above. अगर हम डिस्कस करें इसके ऊपर, आज भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन के वर्ग के लोग हैं जो उस क्षेत्रों में ये सारी फैसिलिटियां कॉस्टली पड़ने के कारण ले नहीं पाते, सो दैट दे सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस बहु, सो दे डाई फ्रॉम डिजीजेस बहु, वो या तो बीमारी से मर जा रहे हैं या सफर करते हैं बच्चे. नाउ पॉवर्टी लाइन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. A common method used to measure poverty is based on the income of consumption level. Poverty line may be vary with time and place. Which if we will discuss urban area, if we will discuss a rural area, there is a difference amongst their income, their buying capacity, their source of income parts. Which so we can say poverty line may be vary with time and place. Like that, the things that is costly for us at Bokaro, that is cheaply for us in our rural area. So that we can say it is vary from time and place. Okay, thank you. We'll discuss it in next class group.